हेलो। So we have the chance to अजान केवली के साथ धर्म चर्चा का एक मौका है। तो कुछ सवाल हों तो हम ले सकते हैं, और फिर अजान को भी हम इनवाइट कर सकते हैं। पर क्योंकि दोपहर का समय है और कम से कम यहाँ भोजन कुछ ज़्यादा अच्छा था, तो इसीलिए संभवतः सवाल जवाब में ज़्यादा लाभ रहेगा। I'm saying the meal was a little too delicious, so the Q&A may be better than. जो इंटरनेट ऑडियंस है वो भी चाहे तो पार्ट ले सकती है, कुछ पूछना हो कहना हो। It might come, so you can just wait for a few minutes, and if it doesn't come, then you can do that.
Okay, Yeah. yeah, Ajahn, maybe. May I ask, Bhanteji, हाँ, may I ask? जी जी. Yeah. Pranam Ajahn. Ajahn, if my memory is right, I heard that Brahma Vihar is your favorite chant, one of the favorite chants. So I wonder if you can guide us, like, I mean, how to, if there any particular suggestion as how to, inculcate Brahma Vihar. We chant it every day, but is there any way we can imbibe deep inside? Because uh, uh, despite chanting, sometimes, thoughts of ill will and anger do come. So I just wonder if it is your favorite chant. Can you help me? So thank you for asking about my favorite chant. It's the Metta Sahagatena Cetasa Ekang Disang Paritva Viharati Tata Tutiyang Tata Tatyang Tata Chatuttang Iti Uttammo Tiryang Sapati Sapantaraya Sapavantang Lokang Metta Sahakatena Cetasa Vipulena Mahakatena Appamanena Averena Apayapachena Paritava Viharati. I find this particular chant very instructive for meditation because it gives us qualities of the metta, karuna, mudita, and upekha as boundless qualities, which one should radiate into the 6 directions. I don't know for what reason, but I don't go clockwise, but I go to the front and to the back, right and left, and then above and below. I don't know where I have this from, but it doesn't say which direction first, and it doesn't matter, I think. But I find it's very intuitive for me to imagine that one can project good energy into a sphere or into a direction. And the other metta chant that we many times do, or metta instruction for metta bhavana, is to use the recollection of certain people or beings or animals that one likes, feels neutral about, or feels aversion to, and to directly send loving kindness to those beings. And I find it also very, very, say, uplifting just to use the quality itself rather than with a specific purpose. What I also find is good in this chant is that like there's some mental activity involved. Like you generate loving kindness in your chest area, in the heart area, in the solar plexus area. That's where I would generate it. It's not said in the chant, but it's the obvious thing that I don't create metta with my say arms and legs or my head even, but with the heart, and that we feel it from there, and then imagine if I could send this positive feeling or sensation or energy that I'm experiencing to the front, if I would like a light beam that was shining to the front or shining to the back, to the right and to the left and up and below. So there's a mental activity in trying to create this an appropriate experience in line with these 6 directions. And it means sending this energy out. And also it says unbound, exalted, and measureless. So imagine I had this infinite source of energy, and I would just
let it shine or let it radiate into this direction. So this itself, just about loving kindness, I find already very invigorating, because it entails an amount of inner activities. You don't actually have to do anything other than direct the mind, and it's an active way of using one's mind while sitting. You can also do this while you're walking or standing or while you're about to go to sleep. But if we're only somehow passively watching things, or passively, say, contemplating, then what happens many times is that the mind gets dull and becomes like sleepy. So this is one of the things where nobody knows that I'm actually active, but I can be active while I'm sitting still. And I like that thing, that secretly you do something, and you don't have to make much of a fuss about it. And another good aspect is that this chant goes through the 4 Brahma Viharas, and there's a change of atmosphere, a change of feeling, a change of the tone of the Kammatthana that takes place. If you want to translate, I'll stop here first. Okay. अजन ने मेत्ता के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो शुरू में उन्होंने बताया कि हम जो लोग चैंट करते हैं तो हम सभी डायरेक्शंस, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं की बात करते हैं, बट वो ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर है नहीं कि क्लॉकवाइज करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज करना है, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं मेत्ता के बारे में। उसके बाद दूसरा वो बोल रहे थे कि जो वो खुद से मेहता की जो प्रैक्टिस करते हैं कि वो एक एक्टिव माइंड क्वालिटी के हिसाब से करते हैं, ये ऐसा नहीं कि पैसिवली है। तो अपने बारे में वो बता रहे थे कि वो जैसे छाती के सेंटर में वो एक पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करते हैं, जिसको हम मतलब दिल का मतलब एक एरिया बोल सकते हैं, उसको जनरेट करते हैं। और फिर वो मतलब एक क्वालिटी को वो करते हैं कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी को आगे की तरफ ही भेजते हैं, पीछे की तरफ ही भेजने की कोशिश करते हैं। और ये वो उनके हिसाब से कि वो एक एक्टिवली एक प्रोसेस है, rather than just making it a theoretical, एक मतलब सिर्फ theoretical प्रोसेस के हिसाब से अगर हम करेंगे। तो वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे। So the first part about metta is very intuitive. It's the favorite of the Brahma Viharas of many of the people I know. It's like tangible loving kindness and friendliness, friendship, maitri, and in a sense of like appreciation without negativity. And the second Brahma Vihara, which then when I chant this in my mind, or we chant it aloud together, it goes quite quickly. You don't have much time for the metta part. And then it already changes to karuna, like, which means compassion or a sense of care and say pitying somebody, or like being ready to be helpful to a person. And these are connotations of karuna, which are slightly different than metta. Of course, like you can translate these into each other, but the emphasis on karuna is slightly different. So there's another mental activity. Instead of just doing one thing for a whole session of half an hour, 45 minutes, or an hour, I've got a different task in quite a short time. And I feel we should be able to generate these Brahma Viharas independently, so to say, on the spot, which is obviously not always easy.
But I like the fact that, like in this chant, if you repeat it 4 times, it comes up very quickly that you need to swap to something else. अजन अभी जैसे आगे बढ़ के बता रहे थे कि जैसे दूसरे ब्रह्म विहारा के बारे में वो बता रहे थे कि जो करुणा है तो उसके एस्पेक्ट बता रहे थे कि उसमें जैसे हम लोगों को हेल्पफुल वाली फीलिंग जनरेट करते हैं और वो ऐसा नहीं कि हम टाइम बाउंड होता है एकदम से वो चेंज हो जाती है जैसे फर्स्ट वाली ब्रह्म विहारा से सेकंड वाली में हम आ सकते हैं इसमें ये भी मतलब इसमें भी क्वाइट एक्टिवली माइंड को इन्वॉल्व कर सकते हैं हम लोग और To do it in real time, do it quickly, and तो हम अजन वही बोल रहे थे कि कोई लगातार कर सकते हैं ऐसा और हाँ अजन ये भी बोल रहे थे कि हम जब एक सेशन में मेडिटेशन सेशन में बैठते हैं जैसे 40-45 मिनट तो हम ये नहीं कि एक ही चीज़ में होते हैं वो चीज़ें हमारा माइंड जब इन चीज़ों की तरफ बढ़ता है तो एक जैसे मैत्री से करुणा एकदम से बदलती है अगर हमारा माइंड अच्छे से उसमें काम कर रहा है the next Brahma Vihara is then Mudita, which also comes in the same short period of time while going through this recitation. Then to be able to quickly swap the ingredients of this radiance is also just simply feels worthwhile for me. It seems like a good task to learn how to do that. And mudita is appreciative joy, taking delight in the goodness, good actions, or the good qualities of another person or another being, and the quality of mudita feels slightly different than karuna, and karuna is a bit like my feeling is like a readiness to help out because you see somebody else is suffering, that you immediately want to support and lend a hand. I had one session ages ago, which I'm going back to Karuna now. I had one session ages ago, which was very memorable in a Zen group in Berlin, where I was still a student, and we were sitting there watching the breath. Basically, they don't use any particular meditation object, or if anything, they count the breath in this group. So I may have been counting or just simply watching the breath. And there was like a cry of help outside. We were in the city center and in the basement, like half a staircase down. And I just immediately jumped up and felt there was no question that I just wanted to run out and see what's happening. And that energy of like, if you see somebody needs support, that you wouldn't hold back in giving it. And that's a capacity that I want to generate for myself. This would be the karuna. अगले ब्रह्म विहारा के बारे में अजन बता रहे हैं वो मुदिता के बारे में बता रहे हैं तो उसी प्रोसेस को लेके वो बोल रहे थे कि ये भी एकदम से जो करुणा है वो मुदिता में बदल जाती है और मुदिता के बारे में वो बोल रहे थे कि ये एप्रिशिएटिव जॉय मतलब हम दूसरों की खुशी में खुद शामिल होते हैं कि उनकी खुशी को देख के हमको भी प्रोत्साहन मिलता है और सिर्फ दूसरों की नहीं दूसरे लोगों की दूसरी चीज़ों की दूसरे बीइंग्स की अच्छी क्वालिटीज़ में हम डिलाइट लेते हैं और उसके आगे जाने से पहले अजन अपनी करुणा के बारे में एक पुरानी एग्जांपल दे रहे थे आई थिंक वो बता रहे थे काफ़ी वर्ष पहले वो बर्लिन में एक सेशन कर रहे थे ज़ेन मॉन्क्स के साथ और वो बता रहे थे कि वो कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं ब्रेथ के लिए बस वो जैसे शायद काउंट करते हैं ब्रेथ को तो अजन भी उस सेशन में बैठे हुए थे और उनको एक वो थोड़ी सी करुणा का भाव उनके मन में था और उनको शायद जो बिल्डिंग के बाहर अचानक से किसी की
आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए मदद मांग रहा था, और उनके मन में एकदम से वो भावना आई कि मुझे उनको जाके बचाना है, और वो एकदम से मतलब अपनी सीट से उठ के उनको बचाने के लिए गए। And now back to mudita. I'm pretty sure if you were to just dwell on each of the different of the four Brahma Viharas, you would find out the distinct quality each one has for yourself and be able to associate something with it. And then to be able to access this quality, so to say, in real time is again like given in this chant that we go through it quite fast actually, and are supposed to do something with it, like generate it. And mudita is very closely related to katanyuta as well. I don't know whether that's a textbook Dhamma or not, but like that's how I feel like. And in fact, when the monks, for example, give their blessing, it is not a saying thank you, which means like a kind of trade of you give me this, I say thank you. Like my grandmother holds the candy, says, what do you say? What do you say? We say thank you, and then we get the candy. So it's more like a spontaneous appreciation. Like the little kid would be so happy that the grandmother does a good deed. So similar, the monks, they generate the quality of like rejoicing in the merit, seeing things, seeing the positive actions of other people. You can maybe and being grateful that there are positive traits of action, positive energy, and to want to be able to have that recognition and being glad about other people's goodness. So I know in our chanting book, sometimes it's translated with the word gladness. I don't like that too much, but like being glad that somebody else has done something good, positive, brings up a rejoicing, brings up a response in our heart that we would like to have, like all the time, being ready for the goodness rather than being critical, being judgmental, being, say, negative about what other people do. So also, if you figure out what this term or this quality means for yourself, I'm sure you can come up with for a slight shift of the heart energy for each and every one of the Brahma Viharas. हाँ, आगे अजन बोल रहे थे कि जैसे ये चारों ब्रह्म विहारा हैं, तो आप सब लोग भी पर्सनली किसी भी ब्रह्म विहारा के साथ रिलेट कर सकते हो, और कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसी क्वालिटीज होगी जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। हर इंसान के लिए कोई ब्रह्म विहारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, दूसरे के लिए कोई दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसके आगे चलते अजन ये बोले थे कि मॉन्क्स यूजुअली हम लोग थैंक यू नहीं बोलते, जैसे वो अपनी एक बता रहे थे कि जैसे आई थिंक एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे दादी माँ होती है हमारी, तो वो बोलते हैं कि हाँ वो टॉफ़ी देते हैं, तो हमको बोलते हैं कि हाँ के टॉफ़ी दे रहे हैं तो क्या बोलते हैं, तो यूजुअली हम लोग बोलते हैं थैंक यू। तो वो बोल रहे थे कि जैसे हम लोग मॉन्क्स हैं, वो हम लोग ऐसे थैंक यू नहीं बोलते, बट हम उस रिजॉइस करते हैं दूसरे इंसान की खुशी में, क्योंकि वो हमको दे रहा है, वो खुश हो रहा है और हम उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। और आगे जाके वो बता रहे थे कि हम लोग जब ये सारी अच्छी क्वालिटीज, गुडनेस अपने चित्त में रखेंगे, तो जब भी कुछ होगा तो इंस्टेंटली वो गुडनेस हमको दूसरों में देखने को मिलेगी, रेदर देन के जो नॉर्मल हम लोग जिंदगी में दूसरों की गलत क्वालिटीज में और नेगेटिविटी देखते हैं। अगर हम ये ब्रह्म विहारास डेवलप करते रहेंगे तो हमारा मन दूसरों की अच्छी क्वालिटीज में को देखेगा और रिलेट कर पाएंगे हम किसी ना किसी से। So the last Brahma Vihara, is upekha, equanimity. And so in many question and answer sessions, people are asking how do you develop upekha. I honestly don't really know, but I think I can imagine what it may feel like
I think about somebody who's like very neutral, peaceful, and has got a feeling of everything is good enough, and is not in that sense active, that he or she then tries to improve, tries to adjust, tries to adapt, tries to add or so, but everything's just in a very solid way, just the way it is, right? Coffee hai. Yeah, coffee hai. It's good enough. It's already enough. And then I like this one, of course, as well, because it seems like difficult to access. If we think about it in ultimate terms, it's a very high quality. Of course, metta, karuna, mudita are as well, but the upekkha seems to be the epitaph of nibbana or peace. And without any claims that we are fully able to generate this, we can allow ourselves to go into that direction and use that little thought experiment. Suppose we had this upekkha energy, what would it feel like? And then sure enough, on the same spot that before we've been outreaching and sending stuff, doing things, and you suddenly tell yourself, now generate the energy of everything's perfectly all right. Just relax. Aram se, aram se. Aram se, काफी है. अजन अभी बता रहे थे चौथे ब्रह्म विहारा के बारे में, जो उपेक्षा है, जिसको हम इक्वेनिमिटी बोलते हैं। और अजन बता रहे थे कि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ज़्यादातर उसमें इसके बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि भाई ये उपेक्षा क्या है, इक्वेनिमिटी क्या है, और वो ऐसे बोलते हैं कि इसके बारे में ऐसे क्या बोला जाए, बट जो वो समझते हैं कि वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक न्यूट्रल किस्म की है, मतलब वो जो न्यूट्रलिटी की है, शांत भाव की क्वालिटी है। एक्टिवली ऐसे नहीं है कि कुछ कोई, वो बता रहे थे कि वो इंसान शायद ऐसा होगा कि जो खुश रहता है, ओके, मतलब जैसे उन्होंने एक वर्ड यूज किया हिंदी वाला कि काफी है, मतलब किसी भी सिचुएशन में इज इनफ, इज नॉट लाइक, वो ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो लाइक ठीक है सबसे, मतलब जो भी हो रहा है उसके हिसाब से ठीक है। और वो बता रहे थे कि ये सबसे ऊंची एक क्वालिटी में से है, अगर हम निब्बाना की तरफ बढ़ते हैं तो ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है। बट अब वो ये बता रहे थे कि जैसे अब इसको भी जैसे बाकी तीन क्वालिटीज वो बोल रहे थे कि उसको हम कह रहे हैं कि हम जनरेट करेंगे, तो हम इसके बारे में कई बार एक एक्सपेरिमेंट अपने से कर सकते हैं कि हाँ ये अगर मैं ये जो इक्वेनिमिटी है, मतलब उपेक्षा है कि ठीक है सब कुछ, तो अगर वो कैसी होगी, अगर कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आएगी तो किस तरह की वो क्वालिटी होगी, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं सर। And just revising again in my mind and the slight differences of the four Brahma Viharas and how it culminates in Upekkha, I'm sure you can experience by yourself and try and take it as my feeling around it, and not as a textbook answer. But I feel when I go through these four different Brahma Viharas in a quick time, fairly quick time, and in alternation between them, it makes clear that actually there is a sense of wanting in each of them. For example, with Metta, wanting everybody to be good, everybody to be say happy, everybody to be at ease, and then Karuna, wanting to help or wanting to support, or like sending support energy, or feeling if I do this, I am actively supporting with some to compensate some need, like wanting to help to overcome dukkha, basically, as karuna. And then mudita is then wanting everybody to be joyous and feeling joyous about every, like the feeling, oh, if I could only be very, very joyous, happy, having lots of like rapture and joy, and the world needs it. So there's this like slightly urge. And the last one you can say desiring peace, or like an energy that alludes to peace. And if we generate this, we try to spread
something that is actually beyond all these other Brahma Viharas, and makes it feel like we're reaching the pinnacle of everything. Like we're in terms of qualities, it's the most settled quality. And how do you generate peace? It's not by running around and putting a band-aid on the wound of somebody. It's also not by counseling somebody who's in a bad mind state or so. It's not like, say, congratulating somebody. It's like ultimately it's, say, coming from a heart that doesn't want anything and doesn't need to go anywhere and has a feeling of being completely settled in oneself and accepts all of nature as it is. So it's like, to me, it's the ultimate Brahma Vihara, to be having upekha. And how to find it, it's like, it's not that difficult after having, like, to a certain level, of course. After having particularly been quite active, it almost feels like relaxing. So now back, even though I'm sitting, before I'm sitting, sending energies to the front, to the back, left, right, up and below, kind of active, Upeka says, can you also send peace? In that sense, can you be also ultimately peaceful in your heart, towards the front, towards the back, towards anything that happens left and right, above and below you? And so this is like, that's why I like this chant. अभी अंत में अजन ये बोल रहे थे इन क्वालिटीज के बारे में कि ये सभी जो चार ब्रह्म विहारा हैं ये कुछ कुछ अलग हैं, और जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ आएगा। लेकिन वो बोल रहे थे कि इन सब में एक, जब भी हम इनको प्रैक्टिस करते हैं तो एक सेंस ऑफ वांटिंग होता है कि हाँ कुछ होना चाहिए। जैसे वो बता रहे थे कि जब हम मेता की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे में एक वांटिंग होती है, चाहत होती है कि सबका अच्छा हो या सबके लिए अच्छा हो। तो मैं एक एक्टिवली वो एक डिजायर से कर रहा हूँ कि सबका अच्छा होना चाहिए, तब मैं जनरेट कर रहा हूँ। दूसरा वो करुणा के बारे में बता रहे थे कि उसमें हमारी जैसे चाहत होती है कि हाँ सबको सपोर्ट कर सकूं मैं, अगर किसी भी कारण से या किसी भी तरीके से मैं किसी को सपोर्ट कर सकूं तो मैं वो मौका नहीं खोऊंगा। वैसे ही वो मुदिता का बता रहे थे कि वही एक चाहत के सभी लोग खुश हों और उनका अच्छा हो, तो वो वाली चाहत रहती है। बट फिर वो लास्ट में उपेक्षा का बता रहे थे कि उसमें हमारी जो चाहत होती है कि पीस के सभी लोग शांत हों और वो हम लोगों में बांट सकें। लेकिन वो बता रहे थे कि ये जो उपेक्षा है ये कैसे करेंगे, मतलब कि पीस मतलब शांति कैसे मिलेगी। तो वो बता रहे थे ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को कुछ कट मतलब लग गया तो हम उसके ऊपर जाके बैंडेड लगा देंगे या उसको अच्छी चीजें बोलेंगे तो उससे शांति मिलेगी किसी को। तो लेकिन वो बोल रहे थे कि जब हम ये सारे ब्रह्म विहारास कल्टीवेट करते हैं तो जो उपेक्षा है वो भी इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और हमारे मन में जब हम पहले 3 ब्रह्म विहारास को कल्टीवेट करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और वही फीलिंग हम जनरेट कर सकते हैं एक शांत, उसी से हमारा जो हमारे मन में जो शांति आती है तो वही हम आगे पीछे ऊपर नीचे एक किस्म से भेज सकते हैं, जिससे हमारे आगे पीछे या सभी लोगों को शांति उपलब्ध हो सकती है। Just footnote to the very beginning when I said I don't really know why I go from not why I don't go clockwise, but I go to the front, to the back, to the right, to the left, up and below. I guess it just centers me, because like it's to front and back, I'm in the middle, left and right, I'm in the middle, up and below, I'm in the middle. It just feels like it brings up this quality. This energy is right in the middle of everything and just emanates into these 4 quarters or 6 directions. So it's just something I realized while thinking about it now. अंत में अजन ये बोल रहे थे कि जब शुरुआत में उन्होंने बोला कि वो क्यों
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाते, सिर्फ उनके लिए जो वो कहते हैं कि काम करता है कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो वो उनको ऐसा फील होता है कि वो जब इस प्रकार से इन क्वालिटीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो वो सेंटर हैं, इन सभी चीज़ों के बीच के मध्य में हैं। तो उनको लगता है कि ये जो एक्सेस या जो ये एनर्जी है वो जब वो सेंटर में है तो वहाँ पे उनको मिल सकती है। So describing it like this is something that I came up with, and I would think that everyone has got like ways of accessing certain quotes from the suttas or certain chants that we do, and I think it's a perfectly all right, valid practice to use these chants, or it's basically from the suttas. You find it this passage. Metta sahagatena cetasa ekang disang paritva viharati, and so forth. You find it in quite a few suttas, um, and so it seems to be that like it is needed in many places. For example, in to be able to generate these qualities with a boundless mind, with a mind that doesn't limit it to a certain situation. And one of the suttas where it comes up is also one of my favorite ones is the simile of the saw sutta. अजन बता रहे थे कि हर इंसान के लिए जो ये क्वालिटीज हैं वो डिफरेंट तरीके से सूताज में हैं और वो अपने हिसाब से उनको एक्सेस कर सकता है। ये नहीं है कि जो चीज़ एक के लिए काम कर रही है वो दूसरे के लिए करेगी। तो आपको अपने हिसाब से ये जो भी चैंट्स हम करते हैं या सूताज पढ़ते हैं तो उसमें हमको अपने लिए जो हमको हमारे सबसे करीबी फील होता है वो हमको आसान रहेगा। और वो बता रहे थे कि ये सारी जो चीज़ें हैं क्वालिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा स्थानों पे उनकी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे हम काफ़ी परिस्थिति में होते हैं तो हमारा जो चित्त है अगर वो बाउंडलेस से खुला होगा तो वो ज़्यादा सबके लिए अच्छा होता है, rather than कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ में फिक्सेटेड हो जाते हैं। नैरो माइंड मतलब कि वो चीज़ में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हमारा मन और चित्त ज़्यादा खुला होगा, बाउंडलेस होगा, तो हम उस चीज को उसको बड़े रूप में या ऊपर से देख सकते हैं। And in the simile of the saw, it first centers around unsuitable reactions to wrong speech, the provocation of anger in the heart of somebody through untimely speech, unfactual, harsh speech, and speech that lacks kindness. And so these things can happen. And the Buddha then kind of in a hyperbolic way then gives the simile. Hyperbolic means like the over the top way, so to say, with due respect, like in a very, very strong simile, he gives the advice that whatever people say to you or do to you, even if bandits came with the two-handed swords and were to cut off your limbs one by one, basically, those who have give way to a heart of hatred or anger would not fulfill his teachings. So then it adds this refrain, which like refrains like in music when you have like the middle part of the song always repeats itself. So it comes one last time as and I will abide by pervading one quarter with a heart imbued with loving kindness, likewise the second, likewise the third, likewise the fourth, and so forth. So it's just like a very powerful tool, I believe. And this simile of the saw is very impressive when one thinks about how consistent one needs to be able to look after one's mind and not to give rise to thoughts of anger, for example. And
obviously this is a big task, so I use this metta chant to kind of like work on this, and it feels like a very suitable exercise. And then if one has gone through one round, then keep chanting it, and then it repeats itself, and it's a bit like, maybe it's a bit like a sport. I try to be able to generate these 4 Brahma Viharas quickly and far-reaching while passing through the chant. अभी अजन सिमली ऑफ सॉ के बारे में आरे की उपमा के बारे में बता रहे थे, जिसमें वो सबसे पहले बता रहे थे कि जो हम लोग जो हम अपने वाक मतलब जो हम अपन बातचीत करते हैं, मतलब उसके बारे में बता रहे थे कि जो जो शब्द हमारे मुंह से आते हैं कि एंगर के हैं, इल विल के हैं, किसी के बारे में जलसी के हैं, तो उसके बारे में वो बहुत स्ट्रांगली बता रहे थे। और वो बता रहे थे कि बुद्धा ने जब एग्जाम्पल दी थी तो उसमें बोला था कि अगर कोई भी इंसान, जैसे वो बताते हैं कि कोई भी अगर अगर कोई इंसान को कोई मतलब रास्ते में जो डाकू हैं समझो, वो अगर उसको मारते हैं और उसको बाद में पूरा काट के छोटे छोटे पीस में भी डाल देते हैं, और अगर वो बुद्धा बोल रहे थे कि अगर उसके मन में तब भी उन लोगों के बारे में एंगर आता है तो वो मेरी जो शिक्षा है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि जब हमारे बुद्धा हमको इस लेवल का स्टैंडर्ड दे रहे हैं कि इस लेवल पे आपको काम करना है, तो जन बोल रहे थे कि हमको कितना छोटी छोटी चीज़ों पे अपने चित्त पे देखना पड़ेगा कि जब कोई भी बात होती है तो हमको ये देखना कि क्या हम कोई भी हमको कुछ बोल रहा है या कुछ हो रहा है तो हमारे चित्त में उसके प्रति घृणा या एंगर आ रहा है कि नहीं है। तो वही बता रहे थे कि कितना बड़ा कार्य है, और हम कभी भी हमको मतलब इसको छोटा लेके नहीं छोड़ देना कि हाँ ये छोटी सी बात, थोड़ा सा मेरे मन में किसी के प्रति घृणा आ गई या बैर आ गया, तो हमको हर टाइम ये चीज़ पे लगे रहना। और फिर वो बता रहे थे कि कुछ उन्होंने म्यूजिक का एग्जांपल दिया, और वो बता रहे जो बार बार आता है, तो वही वो बता रहे थे कि अगर जैसे हम ये चैंट्स को बार बार दोहराएंगे अपने मन में, जब वो हमारे अंदर स्थिर हो जाएंगी, तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, जब भी कुछ हमारे परिस्थिति के विपरीत चीज़ें होती हैं तो हम हमारे को उसका एक्सेस रहेगा, ना कि हम वो चीज़ हमको ले लेगी कि हम किसी के प्रति घृणा और द्वेष से करें, rather देन हम वो माइंड स्टेट को रोक पाएंगे। And in the simile of the saw, it also gives say powerful comparisons of somebody who's unshakable in those Brahma Viharas. For example, it says if somebody was taking various colors like indigo, gold, and black and white and trying to paint pictures in the air, in the open space, this cannot be. Similarly, so somebody who's got these 4 Brahma Viharas cannot give rise to that anger or to that like feeling of aversion, or like some uninstructed person would come and take a shovel and try to shovel away the earth until the whole planet Earth was earthless. Wouldn't that man only reap weariness and fatigue? And but the earth remains the earth, no matter how much you shovel away. And then another one is like the cat skin bag, which is a funny one, which I never really understood. But like I believe it's like if you have like somebody who does leather work, and he takes the skin of a cat or a wild cat, and then processes it properly, then it will always be soft. It won't be hard again. It won't be like, it'll be like it's not possible to make that crack or feel rough
because it's been completely cured of that that quality once it's done skillfully. And then the last one is if somebody was take I don't know about the sequence anymore, but one of the last one I remember now is the taking a grass torch and trying to dry out the river Ganges. So this was before climate change, but like it's an impossible thing. You can't take a torch and or like a fire and make the whole Ganga free of water. So similar, our mind will not be able to utter angry words or like give rise to thoughts of anger and deviate from the thoughts of metta, even if bandits were to come and cut off your hands and feet. जन अभी वही आर्य की उपमा को आगे ले जाते हुए बता रहे थे कि जब हम हमारा मन इन चीज़ों में एस्टेब्लिश होगा, और वो इसके बारे में 4 एग्जाम्पल दे रहे थे। जैसे कोई इंसान अलग अलग रंग होते हैं, इंडिगो कौन सा होता है, इंडिगो ब्लू, अलग अलग कलर होते हैं, तो उनको करते तो मिक्स नहीं होते वो। हाँ, तो वो बता रहे थे कि जैसे अगर हम अलग अलग रंग हवा में फेंकेंगे तो जो आकाश का कलर है वो तो अलग नहीं हो जाएगा। दूसरा वो बता रहे थे कि अगर हम जैसे फाफड़ा लेते हैं और फाफड़ा लेके मतलब मिट्टी निकालना शुरू करते हैं, और अगर कोई सोचता है कि पूरी पृथ्वी को वो फाफड़ा लेके कहीं ख़त्म कर देगा, तो वो नहीं होगी। अगली वो तीसरी एग्जाम्पल बता रहे थे कि जैसे मान लो कि जो जंगली बिल्लियाँ, मतलब जिसमें शेर चीते होते हैं, और कोई जो चमड़े का काम करता है, और वो उसके बाद उसकी जो खाल को लेके अच्छे तरीके से उस पर काम करके उसका कुछ पहनने की चीज़ बनाता है, तो वो काफ़ी मुलायम हो जाती है। वो फिर ऐसा नहीं है कि जैसे पुरानी हो जाएगी, कि मतलब फिर से जैसे पहले अकड़ी हुई थी और जो खुरदरी थी, तो जब उसका काम कर लिया होगा तो वो कोमल ही रहेगी। और आखिरी वो बता रहे थे कि जैसे कोई इंसान आता है, वो बोलता है कि मैं छोटी सी मशाल से पूरी गंगा को ख़त्म कर दूंगा, सुखा दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अजन यही बोल रहे थे कि जब हमारा मन उपेक्षा में, इक्वेनिमिटी में एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो कोई भी परिस्थिति या कोई भी चीज़ हो, कोई इंसान हो आएगा या कोई परिस्थिति आएगी, तो हमारे मन से कोई भी दुर्विचार या कोई एंगर का थॉट या कोई भी चीज़ उनके प्रति नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारा जो चित्त है उस चीज़ में स्थापित हो चुका है। So I believe then, as with all meditations, it's up to the person practicing how they experience this scenario. What I've been saying is like about my access path to these qualities and my training in trying to find good examples or make them into a real task or a real practice, rather than just wishing them to be, or like reading about them and discussing them. So I hope that you take some time to just find good access points to feel metta, karuna, mudita, and upekkha in your own hearts, and then be able to then possibly to various levels of engagement, then being able to then extract or take the essence of these experiences and then use them in, even though this seems like when one does a formal meditation, it seems in one way removed from a real life situation. Even when we do anapanasati, we just sit there, close our eyes, don't care whether it's hot or cold, don't care whether it's late or early, whether it's what we've done in the past or the future. It seems like an isolated exercise.
And so similar with the Brahma Viharas, if we sit and create the Brahma Viharas, it's meant to make these qualities a tool for us to be dispensable, or this at our disposition. That's the word. At our disposition, to have that potential. So how to get to know what this potential is? We maybe use reflections, thinking about when you really felt a loving kindness impersonally to other beings. And that's fair enough to think of people that are very innocent, for example, like children, or or like your granny or so, something incontrovertibly nice that triggers the feeling of love in an impersonal way. And karuna, then extracting the sense of somehow helpfulness in the context of samsara, where everybody is suffering, and you wish them freedom from suffering, wish them a way out of the misery, and have that sense of like getting an angle on that, so it can be of some effect. Mudita then rejoicing in the goodness, like for example, having mudita about the offerings, for example, the birthday cake for Ajahn Sawang. It's just such a nice gesture, and it's not about the material offering. It's about the gesture, and then picking up on that. Oh, somebody else is doing something good for another person. That brings up the feeling of mudita. I say like rejoicing in that, and reverberating with that. And then upekkha, the peace that is unshakable in terms of challenges. And maybe there are situations where we can recall the quality maybe in another person, maybe even in ourselves, where we have been able to drop things, drop any charges, drop any answers, or any debates, or any compromises, and are just perfectly all right with everything and at peace. So then with these examples, then to try to filter that particular sort of energy and be able to use it, and have it as a like a torch shining into all directions. If one does this quite a few times, maybe one ends up literally dropping the chant, like so many times as we do Kammatthana. Some point we drop the instructions and are simply doing this. And it's not a matter of like measuring when will I be able to do this, but it happens spontaneously. It may well be that you feel so much engaged in these generating these energies that you just simply sit there and radiate. And maybe a very, very nice experience. And I wish everybody to have some access points and then create the potential. Yeah, okay, translate first. Okay. Press the wrong button, sorry. अभी अजन ये बता रहे थे कि जो ये भी सारी प्रैक्टिसेस और ये इन चीज़ों के बारे में बताया, तो हर इंसान को खुद से प्रैक्टिस करनी है और वो खुद से इन चीज़ों को एक्सेस पा सकते हैं। और वो जो सारा पीछे का उन्होंने बताया था, वो सारा उन्होंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के बारे में बताया कि उनको ये सारी क्वालिटीज़ अगर एक्सेस करनी है, अपने अंदर में लानी है, तो वो ये सारे तरीके अपनाते हैं। तो आप सबको भी जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अलग अलग तरीके से प्रयोग करने हैं, सो दैट आपको कोई भी ये क्वालिटी है वो किस तरीके से उसको एक्सेस कर पाओगे। हाँ, अभी जैसे वो अजन आगे बता रहे थे कि जैसे ब्रह्म विहारा के जो ये सारे क्वालिटी, जब हम इन पे काम करते रहेंगे तो हम किसी भी सिचुएशन में होंगे तो ये एक किस्म की हमारे लिए खाना बन जाएंगे कि जब भी हमको उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये क्वालिटीज़ हमको
हमारे को एक्सेस होगा, उसका डिस्पोजिशन होगा ये, और जब हम इनको डेवलप कर रहे होंगे तो हम किसी भी परिस्थिति में होंगे तो उनको उनकी एक्सेस हमको मिल जाएगी। और अजन बता रहे थे को इसको किस तरीके से जैसे कर सकते हैं, वो बता रहे थे कि जैसे कभी आप सोच विचार कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि कभी आपने जैसे मेता की अगर बात करें तो जैसे छोटे बच्चों को देखकर आपको उनके प्रति मित्रता का भाव उत्पन्न होता है, या जैसे आप कभी अपने दादी माँ या नानी माँ के बारे में सोचते हो तो आपको उन वो मैत्री की क्वालिटी का होता है, और उसी चीज को का विचार आप लेके और जैसे दूसरे प्राणी हैं उनके प्रति वो मैत्री का भाव बढ़ा सकते हो। आगे वो करुणा का बता रहे थे वही के जैसे सभी के लिए जैसे उनके दुखों से मुक्ति के बारे में आप अपने मन में सोच सकते हो। और आगे जाके मुदिता के बता रहे थे कि जैसे सभी के लिए अच्छा होना चाहिए। और जैसे वो आज की एग्जाम्पल बता रहे थे कि सुबह जब हम लोगों ने अजन स्वयं के जन्म दिवस पर उनको एक केक प्रेजेंट किया तो वो एक हमारी तरफ से एक खुशी का प्रतीक था उनके लिए। बट ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो केक दिया मतलब एक फिजिकल थिंग दी है उसके बारे में नहीं है, ये हमारा जो भाव है कि उनकी खुशी में हम खुश हो रहे हैं, तो ये उसको दर्शाता है। और उपेक्षा के बारे में भी वो बता रहे थे कि जब हम उपेक्षा के बारे में कई बार विचार करते हैं तो जो सिचुएशन को रिकलेक्ट कर सकते हैं कि अगर कभी कुछ ऐसी परिस्थिति में हम फंसे हैं और हम काफ़ी इक्वेनिमस या उपेक्षा के भाव में कि हाँ हम शांत रहे हैं या इस तरीके से रहे हैं कि नहीं ठीक है जो भी हो रहा है ठीक है, तो वो विचार जब हम अपने पास रखेंगे और उसको बढ़ाएंगे तो वो जो उपेक्षा की क्वालिटी है वो हमें बढ़ेगी। और अंत में अजन ये बोल रहे थे कि जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो ये किस्म की हमारे लिए एक टॉर्च या मतलब लाइट की तरह होगा जो हमको हर किस्म की स्थिति में हमारे लिए रोशनी का माध्यम बनेगी। और ये जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हम लोग तो फिर हमको जैसे एक्टिवली चैंटिंग या उन चीज़ों पे नहीं करना, वो काइंड ऑफ हमारे चित्त की एक दशा ही बन जाएगी। और एकदम से जहाँ स्पॉन्टेनियसली जिसको बोलते हैं कि जैसे ही कोई परिस्थिति आएगी तो वो जो अ, भाव है जो क्वालिटी है वो उस परिस्थिति में हमारे में जागृत हो जाएगा और हम उसको वो क्वालिटी हमारे में आ जाएगी। I'll just continue on this theme another little bit, but then we have a short break and then next question. Sorry for taking so much time, but like you hit the sweet spot, and this is like so. One thing that is also very important about the Brahma Viharas is that they are potentials and they're not direct actions. And but there are universal qualities, which is also reflected in this chant, and also then a very important feature of how we live our life in the Dhamma is like we train ourselves to have these qualities, but when real life situations happen, it may well be that we're still not accessing these, or like we're still not proficient. We don't have them at our fingertips because we haven't trained them. And we train them from building up the disposition in our mind, for example, to be non-violent, and just like another aspect which you can fit into any of these four Brahma Viharas. And to be then challenged, and when we compare it to the level of Sila Dhamma, Shila, for example, or like general guidelines also in other religions, for example, Christianity, there's always like the sense of you need to do something, you need to save somebody, you need to rescue somebody. And what I'm trying to do with this chant is extract the feeling of being able to help somebody from that example, from that situation, or to have compassion with somebody, and not jumping out to situations and in hospitals or
say hospices or so, to actively search for social work, but to build up the potential that if I'm challenged in that area, that I would be adding those qualities to the situation, rather becoming angry, nervous, averse, or evading, or unpeaceful or so. So this is like what we generate by meditation is like a potential. Generally, when we meditate with the breathing, for example, we create a sense of like letting go and a sense of peace and a sense of joy, rapture. And it's not that we are constantly on a walk around the globe trying to better the world, but we're trying to react to those things that come to us anyway as human beings with a skillful potential at our fingertips, that we don't fall into unwholesome patterns or actions by body, speech, and mind. So being just coming back from Germany and had a little exchange with some Benedictine monks, and the also exchanges with my family and friends, they always come from this action. You got to do something. You have to save the world. And I believe like very much like our approach is you have to work on yourself so the world becomes a better place anyway. If we all have these Brahma Viharas, then the potential towards forgiveness, towards nonviolence, towards skillful conversations is there, and there won't be any conflict. And whereas, like, if we step into the battlefield and say, no, 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 peace, 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 maybe that's less effective. Like, or it's too late. Let's say once the action or the aggression has already happened, many times it's too late. If you're in a family dispute about something silly, about like maybe inheritance or like education of the grandchildren or so, and different generations, they got different opinions, and you step in with an argument, no matter how clever it is, it just doesn't many times it just doesn't help unless people have cooled down and everybody's back into the mode of trust and is feeling that sense of say letting go already. And and this is the power of the Brahma Viharas, I believe. If we practice and exercise our Brahma Vihara potential, and then the situations that come up will be less full of less conflict. There will be less conflict. There'll be less challenges, and we won't react per default. We just won't react to it, or we just react positive to it, or we support positive interactions by body, speech, and mind already through our disposition. And there's no need for this activism that many times in, say, thinking about society and the problems that the world is in, people think, okay, if we have this program, it'll help. If we have that program, it'll help. But like, what do you do if the program manager loses his temper or her temper and spoils the whole thing? Then it's on social media and the whole thing gets kind of like canceled. So next program. So rather work on the source. And this is the source of metta, karuna, mudita, upekkha in ourselves, just like when we do any other meditation. अभी अजन खत्म करने से पहले ये बोल रहे थे कि ये सारी क्वालिटीज एक पोटेंशियल है हमारे लिए, कि अभी हम लोगों के पास ये है नहीं है, लेकिन ये हमारी पोटेंशियलिटी या पॉसिबिलिटी है जिसके तरफ हम काम कर सकते हैं। और ये चारों जो ब्रह्म विहारास के बारे में वो बात कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि ये कोई किसी की पर्टिकुलर नहीं है, ये यूनिवर्सल क्वालिटीज़ हैं। और जैसे वो बता रहे थे कि हम इनमें ट्रेन करते हैं, हम इनके बारे में सीखते हैं और इसके बारे में अपने आप को ट्रेन करते हैं। और जैसे बता रहे थे कि जब हम शुरू में इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है और काम करना शुरू करते हैं, तो हम उसमें स्थापित नहीं होते हैं। तो जब भी कोई पर्टिकुलर रियल लाइफ सिचुएशन मतलब आती है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस सिचुएशन में जो हमारी पुरानी क्वालिटीज़ हैं या जो पुराना व्यवहार है उसके हिसाब से ही हम एक्ट करते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये क्वालिटीज़ का एक्सेस होता है,
तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम इन पे काम करते हैं तो रियल लाइफ सिचुएशन में भी हम थोड़ा लाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी में अजन बता रहे थे कि जैसे क्रिश्चियनिटी की एग्जांपल बता रहे थे कि जैसे क्रिश्चियनिटी में यूजुअली होता है कि वो बताते हैं कि उसमें ज़्यादा फोकस इस पे होता है कि हाँ लोगों को बचाना है या किसी को बचाना है, किसी की हेल्प करनी है। जैसे काफ़ी सोशल सर्विस सर्विस वाला काम पे उस पे फोकस किया जाता है। लेकिन अजन बोल रहे थे कि जब हम लोग ये चीज़ें या जैसे ये चैंट करते हैं तो हम ये क्वालिटी अपने आप में बिल्ड कर रहे हैं, rather देन कि हम बाहर जाके लोगों की मदद कर रहे हैं या लोगों की सर्विस कर रहे हैं। और आगे अजन ये बता रहे थे कि हम जब ये सारी परिस्थितियाँ इन चीज़ों में ये क्वालिटीज़ अपने में बढ़ाते हैं तो हम स्किलफुल मतलब होलसम अच्छे तरीके से हम एक्ट करते हैं, ना कि एकदम से सिचुएशन आती है और रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और आखिर में अजन बता रहे थे कि जैसे अभी वो जर्मनी में थे तो वो उनके जैसे उनके फैमिली में उनसे बात की होगी किसी ने, तो वो बता रहे थे कि सिचुएशन आई और बातचीत में ये था कि हमको जैसे पूरी संसार को बचाना है, कितना कुछ गलत है तो हमको कुछ करके इसको बचाना है। लेकिन अजन बोल रहे थे कि जो हमारा जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं वो दूसरे तरीके से है कि बाहर जाके नहीं करते, हमारा होता है कि हमको अपने पे काम करना है। अगर हम अपने पे काम करेंगे तो हम दूसरों की सहायता भी कर पाएंगे। और एक एग्जांपल वो बता रहे थे कि जैसे जंग का मैदान और वहां जाके हम पहुंच जाएं और वहां बात करेंगे, शांति शांति की बात करेंगे और जंग चल ही रही है तो शायद उसका कोई रिजल्ट आएगा नहीं। और दूसरी वो बता रहे थे कि जैसे कोई फैमिली सिचुएशन में कोई किसी के परिवार में कुछ क्लेश चल रहा है और वहाँ हम जाके बोलें शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तो शायद ऐसा नहीं होगा। जब तक सभी लोग आराम से कुछ दिन उस पर काम करके बैठ जाएंगे तो तभी वो बातें किसी के मन में पहुंचेगी, rather देन कि जब वो सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं और हम बात करेंगे शांति की तो नहीं हो पाएगा। और वही अंत में अजन ये बोल रहे थे कि जब हम ब्रह्म विहारा प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में और उनका एक्सेस हमको मिलता है तो हम लेस मतलब हम प्रतिक्रिया कम करते हैं। और और जो एक्टिविज्म जो आजकल होता है कि हम जैसे सड़कों पे उतर जाएंगे, हमको दुनिया को बदलना है, हम ये कर जैसे बता रहे थे कि इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे सभी लोग एक दूसरे के प्रति गलत बोल रहे हैं कि हाँ कि हम वो गलत हैं ये गलत है, हमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो बता रहे थे कि हम लोगों का जो रास्ता है वो दूसरा है कि हम अपने पे काम करते हैं और जब हम अपने पे काम करते हैं और उसी से हम दूसरों को भी सहायता कर सकते हैं। तो अब हम 3 बजे तक ब्रेक लेंगे। और फिर अगर इंटरनेट में जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर किसी को कुछ कहना है तो प्लीज़ जो आपका वर्चुअल हैंड है ना येलो वाला, उसको अगर आप उठा देंगे तो हम उसको देख पाएंगे, एंड देन आई कैन प्रॉम्प्ट अजान टू टेक दैट क्वेश्चन एज वेल। सो we'll meet again at 3 o'clock and continue. और ऐसा लग नहीं रहा है कि हम अजान we may not be able to go to the ancient monastery, the river isn't safe enough this, yeah. तो ये सत्र हम जितना चाहें बैठ सकते हैं एक साथ, और शाम का सत्र फिर से 7 बजे एज यूजुअल मिलेंगे। सो 15 मिनट में मिलते हैं। Okay, so the session will continue and 15 minutes break के बाद हम यहीं पर बने रहेंगे। जी, थैंक यू थैंक यू। ये यहाँ से हम कैमरा भी ऑन रख रहे हैं। जी मैम।
ओके, सो हमने एक तो जूम ऑडियंस से लिया था सवाल, तो अगर हॉल में किसी के सवाल हो तो हम पहले ले सकते हैं और उसके बाद दोबारा से चेक कर सकते हैं जूम ऑडियंस का। जी बताएं, इनको माइक दे दीजिए। हाँ आगे ले आओ। हाँ सब एक गृहस्थ वाले इंसान को मेडिटेशन करना बड़ा मुश्किल काम है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। आप लोग खुशनसीब हैं, तो गृहस्थ में रहकर कैसे मेडिटेशन किया जाए सब परिस्थितियों को देखते हुए, ये मेरा क्वेश्चन है। The question is, he says he is a householder, so it's very difficult to meditate while being a householder, and he's saying that as monks you are very lucky and it's easy for you to meditate, but how can you guide a person who is a householder to meditate? So, yes, I do believe that we're very fortunate to have like the opportunity as monks, but also as householders, whenever you have the chance to slow down and do simple things mindfully, then that's already the stepping stone to meditation. And the formal meditation is one thing, but the informal meditation is also very important. And perhaps at times in our life, there's more informal meditation, and at other times there's more formal meditation, but both are very valid and important. आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए अजन बोल रहे हैं कि हाँ, हम एज ए भिक्षु हम उस हिसाब से तो फॉर्चुनेट हैं ही हैं या लकी हैं, लेकिन एज ए गृहस्थ ऐसा नहीं है कि आप लोग मेडिटेट नहीं कर सकते। तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, तो कि अपने जीवन को थोड़ा स्लो आहिस्ता ठहराव की तरफ ले जाइए। जो आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर उनको थोड़ा कम करेंगे तो वो ही मेडिटेशन का प्रारंभ है। और हमारी पूरी ज़िंदगी में जब हम एक्चुअली मेडिटेशन करते हैं, तो जिसको हम एक फॉर्मल और इनफॉर्मल मेडिटेशन बोलते हैं, कि एक तो हो गया कि हम टाइम निकाल के बैठते हैं, उसको हम लोग फॉर्मल मेडिटेशन बोलते हैं। और इनफॉर्मली मतलब जब हम दिन प्रतिदिन की क्रियाएं कर रहे होते हैं, उसमें जो भी काम कर रहे होते हैं, उसमें जो भी हमको समझ है उसको किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, वो इनफॉर्मल मेडिटेशन। और वो अजन बोल रहे थे कि वो कोई भी कर सकता है। So there's formal meditation and informal meditation. For example, when we have an appointment, say from 7 o'clock to 8:30, we sit together, that's formal meditation. And informal meditation could be something like when you do your gardening,
and you're cutting the roses or the branches of the bushes, and you mindfully do this with your heart at peace, not thinking about the future, not thinking about the past. You simply do these things without any extra comments or extra desires or aversions. You just simply do your task. It could be also any task that is daily life activity where nobody really pays attention to. For example, when you're walking from the parking lot to the to your house or to your flat, and then to be able to let go of thoughts about the future and worries about the past, but simply enjoying the walking, which is something that we also practice in formal meditation. Simply doing walking without any stories, any comments, just simply experiencing the movement, for example. And if you know that this can be done, even in an informal situation, you can still use the same way of getting your mind back into the present moment. The monks also do this a lot. For example, if we have to walk up the hill and look at the waterway or at the new kuti, then we walk mindfully and try to be in the present, not thinking, what am I going to do if the water is always leaking, or what do I do if the kuti isn't finished before Ajahn Kevali comes, or what do we do if the whole thing breaks down? We don't think like that. We just take step by step and are in the present. So that's informal meditation. But sometimes we have a background of formal meditation. For example, having done walking meditation in a in a session like this, where you just walk up and down, then you train yourself, and then you can use this in informal situations as well. अजन आगे उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए बोल रहे थे कि जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल मेडिटेशन है, तो जो फॉर्मल हो गई, जैसे हम शाम को या सुबह 1 या 2 घंटा निकाल के एक पर्टिकुलर जगह पे बैठते हैं, तो वो जैसे फॉर्मल मेडिटेशन हो गई। इनफॉर्मल उसको बता रहे हैं, जैसे कोई भी आप अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे खेती कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, या पेड़ों के पत्ते काट रहे हो, फूल काट रहे हो, तो ये सारी आप जो भी काम है इनफॉर्मल मेडिटेशन का के लिए टाइम बन सकती हैं। और वो बता रहे थे कि इसको कैसे किया जा सकता है, जैसे कि हम कोई भी काम करें, जैसे हम पेड़ के पत्ते ही काट रहे हैं, तो सिर्फ हम उस टाइम पेड़ के पत्ते ही काट रहे हैं, और हम हमारे अगर कोई भी विचार जैसे राग द्वेष के आते हैं, तो लेकिन हम सिर्फ उसी काम पे वापस आ जाता है कि हम सिर्फ पेड़ के पत्ते ही काट रहे हैं, तो वो ही हमारा एक माध्यम बन जाएगा इनफॉर्मल मेडिटेशन का। और वो बता रहे थे जैसे कोई भी जैसे एक नॉर्मल सी क्रिया है, जैसे हम अपनी पार्किंग से अपने घर तक अपनी गाड़ी या अपना स्कूटर अपनी पार्किंग में लगाते हैं, तो वहाँ से हम अगर जैसे अपने घर तक या अपने फ्लैट तक जाते हैं, तो वो भी एक इनफॉर्मल मेडिटेशन का माध्यम बन सकती है। जैसे हम सिर्फ चल रहे हैं और अब हमारा सारा ध्यान सिर्फ चलने पे है, बनिस्बत के अगर कोई भी विचार आता है कि हाँ, अगर मैं गाड़ी यहाँ नहीं वहाँ लगा देता, या अभी मैं घर जा रहा हूँ तो घर पे क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन सिर्फ हम उसी चीज़ पे आते हैं कि हाँ, हम सिर्फ चल रहे हैं, तो वो भी एक माध्यम बन जाएगा इनफॉर्मल मेडिटेशन का। उसी तरीके से अजन भिक्षुओं की एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे हमेशा हम लोग फॉर्मल मेडिटेशन में नहीं बैठते, जैसे कोई भिक्षु अपनी कुटी की तरफ जा रहा है या जंगल में जा रहा है, तो वो जितने भी विचार आगे पीछे के क्या होगा उसको छोड़ के सिर्फ जो वो चलना उसको एंजॉय कर रहा होता है, और उसी पे उसका ध्यान होता है। और जैसे कुटी पे अगर वो पहुंचता है, तो वो ये नहीं सोचता कि हाँ, कुटी में अभी जैसे बारिश हुई है तो बारिश के पानी से ये हो गया, या यहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए थी। वो बस स्वीकार कर लेता है कि हाँ, ये है, और उसी प्रेजेंट मोमेंट में वो रहता है। So whether you're a householder
or family man, family woman, or a young person or elderly person, or whether you're a monk, a nun, or anagarika, or samanera, both are needed, formal and informal meditation. And how much of both you need may depend not only whether you're a householder or a monk, but also on the phase of your life, the experience in your practice, your tasks in terms of worldly things. And it's always important to have both, but not to judge that one is doing one too little and the other too much. So, but there may be times when we neglect formal meditation and we kind of like get a bit superficial in our attempts. So it is good to have periods of every day set aside where you just simply sit and practice watching your breath, or practice chanting, or like I mentioned, developing the Brahma Viharas, or and any type of kind of formal meditation where you have a certain topic and you have a certain time frame. Maybe it can be, at times it can be just 10 minutes, at other times it's a full hour, at other times it's both morning and evening, at other times it may well not work that you do it in the evening because you've had such a full day and you fall asleep straight away. Then maybe you just do a very abbreviated, short formal meditation, maybe just paying respects to your shrine, and then sit for 5 minutes and then go to bed, something like this. But you need to remind yourself during the rest of the day to keep the Dhamma alive, to be applying the Dhamma, the teachings of the Buddha, the teachings about mindfulness and wisdom constantly. And then at other times it may well be that you have more free time, or like you have the feeling nothing is as important as formal meditation, and then you drop to watch a cricket game on TV or so and just think, I can leave the TV out and just like sit and be quiet, for example. And it comes naturally in phases. And there's a lot on offer as well with other people. For example, we have a group on YouTube where the daily routine has like a morning and evening meditation session together, or you're welcome to come up here or in any other ashram or in any other spiritual place, in order to make a point of this time is reserved for formal meditation, or this is reserved for private time, and not to just apply your actions, but like just to reduce your actions. So it's always a mixture. Also for the monks, sometimes there's times when we are receiving a lot of guests, for example, then we have to make sure everything is in order, clean, all the goodies, all the rooms are prepared, and there's a lot of like little organization things that we need to keep in mind. And so if we do this with a heart of Dhamma and a full dedication that this also is practice, like service and mindfulness while we're doing these things, then it becomes informal meditation. And then maybe at that period, the formal meditation is a little bit less. At other periods, then there's nobody coming, or it's very, very hot, we can't go anywhere. We just go back to our room and just turn on the fan and sit there, watch our breath, and make more effort continuously. So both are important, and the mixture is up to you. And it's not only defined by being a monk or a lay person. It's also depends on health, for example, and the feeling of, say, interest according to the phases of your life. For example, if you have a new job, then of course you need to be engaged with this, and you can't say, sorry, I'm taking time off because I want to go on a retreat. And that basically the new job would be over very soon. So there's times where you do have the time to do formal practice, and then other times you need to then boost the informal practice. अभी आगे अजन बोल रहे थे कि जैसे चाहे आप
गृहस्थ हों, बूढ़े हों, यंग हों, भिक्षु हों, नॉविस हों, अनागारिका हों, आप सबके लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल मेडिटेशन ज़रूरी है। और ये इस पे डिपेंड, इसमें अजन बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें इस पे भी डिपेंड करती हैं कि आप किसी को फॉर्मल मेडिटेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी को इनफॉर्मल में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। अ, हाँ, और ऐसा होता है कि कई बार हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम फॉर्मल मेडिटेशन को उतना महत्व नहीं देते और दूसरे चीज़ों पे ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो बोल रहे थे कि इनफॉर्मल के साथ फॉर्मल मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी हम एक अपने रूटीन या सेट कर सकते हैं अपने लिए, जो कि 5 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है, आधे घंटे 1 घंटे की हो सकती है, या जैसे सुबह उठने के बाद हो सकती है, या रात को सोने से पहले की हो सकती है। और उसमें हम कोई भी चीज़ को अपना मेडिटेशन का रूटीन बना सकते हैं। जैसे हम अपनी सांस को दे सकते हैं, या कुछ चैंटिंग कर सकते हैं, या कुछ सोच विचार चिंतन मनन कर सकते हैं। तो जो भी आपको ज़्यादा क्लोज हैं, जिसके प्रति आपका ज़्यादा झुकाव है, आप उसको उसके प्रति अपना टाइम सेट करके वो आपको करना चाहिए। लेकिन वो बता रहे थे कि इसके अलावा जैसे पूरे दिन में, जैसे हमको इनफॉर्मल हम जिसको बोल रहे हैं कि पूरे दिन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमको अपने आप को बार बार रिमाइंड या वापस से बताना है धर्म के बारे में, या जो धर्म के बारे में एस्पेक्ट या चीज़ें हमको पता है वो बताना है, और उससे हमारा चित्त एक दिशा की तरफ चलता है। और ये सारी चीज़ें जैसे फॉर्मल है इनफॉर्मल है, ये फेजेस में आती है। मतलब कभी आपको आपके ज़िंदगी में फॉर्मल या किसी किसी पर्टिकुलर पड़ाव पे आपको फॉर्मल की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा, कभी इनफॉर्मल की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। और आगे अर्जुन जैसे बता रहे थे, जैसे हमारा यहाँ पे यूट्यूब ग्रुप है, अ, और उनको वो बता रहे थे कि जैसे अगर यूट्यूब ग्रुप है, या जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, किसी और आश्रम में जा सकते हैं, और उसको जाके अपना जैसे 5 दिन 10 दिन 2 दिन जो भी करते हैं, वो अपना टाइम अलग से सेट करके कि हाँ अपनी ज़िंदगी की बाकी एक्टिविटी को छोड़ के कि ये जो 5 दिन है 10 दिन है, या जो भी टाइम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, अच्छी सी प्रैक्टिस, फॉर्मल प्रैक्टिस के लिए अच्छे से दूंगा। और आगे अजन बता रहे थे कि जैसे भिक्षुओं के लिए भी जैसे अभी का टाइम ही हम अगर हम देख लें कि कई बार ऐसा होता है कि इवेंट्स होते हैं या काफ़ी एक्टिविटी होती है, जब जब बड़े भिक्षु या दूसरी जैसे कटीना होती है, या जैसे हमारी मोनेस्ट्री में हमारा एनुअल फाउंडेशन डे वाला होता है, तो काफ़ी भिक्षु बाहर से आते हैं। तो हमारा उसमें ये ज़्यादा ध्यान रहता है कि हाँ जो बाहर से जो भिक्षु आ रहे हैं, जो जो गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए हम किस तरीके से यहाँ पे रहना सुकुशल हो सके और अच्छे से हो सके, ताकि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सके। और उसी तरीके से कई बार होता है कि जब ये सारी एक्टिविटीज़ या इवेंट नहीं होते, तो हमारे पास काफ़ी फ्री टाइम होता है, तो हम उसमें अपना फॉर्मल प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो इसी में वो बता रहे थे कि यही इसी तरीके से सब लोगों के लिए, जैसे आपके लिए भी, चाहे वो आप भिक्षु हो, हाउस होल्डर हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, तो ये सारी फॉर्मल इनफॉर्मल एक किस्म का मिक्स है। मतलब आपको अपने हिसाब से देखना है कि अभी मेरे को क्या सूट कर रहा है। और दूसरी चीज़ वो बता रहे थे कि ये आपके लाइफ में कौन से फेज़ में हो, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। कि जैसे वो बता रहे थे कि अभी आपकी नई जॉब लगी है अगर, और आप बोलोगे नहीं आज मेरी नई जॉब लगी और कल मैं रिट्रीट पे जाऊंगा, तो वो भी अपने को समझ होनी चाहिए कि हमको कौन सी चीज़ पे कौन सा टाइम पे करनी चाहिए। So the
the problem is sometimes that informal meditation gets mixed up with worldly activities and the worldly mind state. So when you're doing things in your household and with your family, that you have the Dhamma in your awareness and your heart, that you work in a Dhammic way rather than in a selfish way, or that you're concerned about status, result, and your reputation and things like that. But you just practice with letting go and try to be adaptable and mindful about things, being very fair and honest about everything you do. So this is like also practice, and this is the difference between worldly activities and meditation, is that your mind is inclined towards the Dhamma, towards letting go, towards a feeling of not self. This is not personal. Somebody says something to me, I don't react in a personal way, I let go. And of course, how easy you can do this, how easy we can let go, and how easy we can adapt to difficult situations and accept them, or make use of them even, then it depends on how much we are applying ourselves to this task. And it's a very big task, and it's not just a task that you can turn on and off. If you have started to realize the significance of the Dhamma, then you can't just turn it off and just play around and fool around and consume ice cream after ice cream, or I don't know what, like the sweet Indian sweets, like after sweet after sweet. Basically, you have to basically feel a sense of, oh, enough, like, and I'm happy with it, and be able to, be content and fair to the situation. So Dhamma practice is more than meditation practice, and you cannot turn off the Dhamma practice. And but the likeness to the worldly mind state, when you define what you're doing through your activities, for example, when you're walking just because you need to go from A to B. But like if you're practicing the Dhamma with it, it becomes a quality action. So to put in the ingredients of the Dhamma into your worldly actions and make them meditative actions. It doesn't mean that you do everything slow, and it doesn't mean that you cannot do certain things anymore. You only have to be very honest and clear about it, and be very fair to yourself and other people. So practice is something that Ajahn Chah, our teacher in Thailand, said, like, is something you can do whenever you have the breath. Whenever you breathe, you have time to practice. You cannot say, sorry, I don't have any time. At the same time, to count the hours of formal meditation and say, today was a real good day because I've meditated 3 hours, or I'll do at least 100 hours of meditation a month, sometimes also has side effects. It makes us think in a worldly way again, about like as if meditation was something like a fitness program, or like a sport or so, or like gymnastics where you have to do your exercises. And of course it is in one way, but on the other hand, it misses the aim of meditation, to let go and to be able to adapt and to take in also unprogrammed, unforeseen things. So not to be too tense about the formalities, and not to be too loose when you're practicing informal practice. अजन बता रहे थे कि इनफॉर्मल मेडिटेशन पे जब हम ज़्यादा फोकस करते हैं कई बार, तो उसमें प्रॉब्लम कई बार ये हो जाती है कि जो हम नॉर्मल, जिसको हम वर्ल्डली एक्टिविटीज़ मतलब संसारिक काम गतिविधियां बोलते हैं, हम उसमें ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, और वो सारे काम हमको लगता है कि हम इनफॉर्मल मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारा झुकाव संसारिक गतिविधियों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसका उपाय अजन ये बता रहे हैं कि जब भी हम ये कोई भी अपने संसारिक काम या नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा ये एक अपने आप को रिमाइंड या अपने आप को बताते रहना है, जो धर्म के एस्पेक्ट्स हैं या धर्म की चीज़ें हैं, अपने आप को बताते रहना। जैसे कोई भी चीज़ है, उसमें कोई परिस्थिति है, तो कैसे हम उसको छोड़ सकते हैं, या उसको पर्सनल नहीं लेना है कि हाँ, ये अगर कोई कुछ आपको बोल देता है
तो अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना कि हाँ ये कोई पर्सनली इन चीज़ों को नहीं लेना है। और इन सारी चीज़ों की वो अजन बता रहे थे कि सक्सेस इस पे डिपेंड करती है कि हम कितना अपने आप को लगातार ये चीज़ों पे लगा के रखते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हमने अभी ऑन कर दिया और थोड़ी देर के लिए ऑन कर दिया और थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल बताई कि जैसे हम भारत में हम लोगों का जैसे मिठाइयों का बहुत प्रचलन और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों, और हम जैसे हर दिन अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खाते रहें और बाद में जब भी मिठाई और खाते रहें और कंटेंटमेंट हम में है ही नहीं, और फिर हम सोचे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने का वो बता रहे हैं कि जैसे इसी को अगर हम लेते हैं तो जैसे मिठाई आई, हम सोच सकते हैं हाँ अब काफ़ी हो गई, अब हम आज मुझे ये मिठाई नहीं खानी है। तो इसी तरीके से जब हमारी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाएगी तो वो ये नहीं है कि हाँ फिर हम उसको एकदम से बंद कर पाएंगे, तो वो हमारा साथ में ही रहती है। और जब आखिर में अजन ये बोल रहे थे कि जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं धर्म को, तो ये ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल स्लो हो जाएंगे, हर काम बहुत आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये है कि हम क्लियर हैं, हम चीज़ों को साफ तरीके से देख पा रहे हैं, सिंसियर और ऑनेस्टी से हर काम कर रहे हैं। तो जैसे अजन चाह की एग्जांपल उन्होंने बताई कि अजन चाह हमेशा बोलते थे कि अगर आपके पास समय है सांस लेने का तो आपके पास समय है प्रैक्टिस करने का। तो इसके बारे में वो बता रहे थे। और दूसरी वो चीज़ बता रहे थे कि फॉर्मल प्रैक्टिस के बारे में कई बार ये हो जाता है कि कुछ लोग जैसे फॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ मैंने आज 2 घंटे प्रैक्टिस की, 4 घंटे, या मैंने इस हफ्ते में 60 घंटे की मेडिटेशन कर ली। तो उसका वो बता रहे थे कि वो एकदम से दूसरी तरफ चल जाता है, जैसे आप बिल्कुल गोल ओरिएंटेड हो जाते हो कि हाँ अभी मैंने इतना काम कर लिया, या जैसे कोई स्पोर्ट्स हो गया, या जैसे आप ऑफिस में मैंने आज इस इतना काम किया तो इसका मुझे ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो वो भी दूसरे एंड पे चला जाता है। तो अल्टीमेटली अजन यही बोल रहे हैं कि दोनों की तरफ नहीं जाके बीच में अपना एक बैलेंस लाना है कि जिसमें हम फॉर्मल प्रैक्टिस भी करें, इनफॉर्मल भी करें, और अपने आप को हर टाइम रिमाइंड करें धर्म की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसके प्रति एक अपने आप को रिमाइंड करते रहेंगे तो बैलेंस अच्छा रहेगा। So, of course, like a little bit like in the light of the first session today, when I was talking about the practice of meditating with the Brahma Viharas, generating the Brahma Viharas, it's then obviously like clear then when we do something formally and we set aside time for a specific task in a specific time, that we get possibly an acquaintance with it in a more direct way than just noticing on the wayside that there's this quality of metta that we should have rather than than anger or so. We try to, in the formal practice, take the potential and make it much, grow it in our hearts, so that when we leave our formal meditation, that we are ready to integrate everything that comes with that potential, with that energy. So that's like when we talk about training, for example, training in meditation, training in the Dhamma, training in the monastery. That's what we mean. We sometimes set aside practice periods where we try to like enrich our experience in a focused way of saying, okay, for example, it could also be contemplations of the body or contemplations of death, Marananusati, which we take a certain topic and isolate it and then reflect on it. And we take our time with this. And it could be here in the monastery, or it could also be at home when you have maybe been inspired by a certain book or Dhamma talk that you want to kind of like work on a certain topic, and you're training yourself and set aside an experiment of like looking at yourself. How much can I generate this understanding, this wisdom, this topic, this Dhamma in myself? So that's the formal meditation, which takes in certain aspects that are useful then later back in daily life. For example, the metta bhavana. If you've practiced metta bhavana, then later you meet
a conflict, and you might be able to just smile rather than argue. And then to say, then that's useful for daily life in this way. जैसे वो बता रहे थे कि जो पिछले वाले सेशन में वो ब्रह्म विहारा के क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि हमको अपने आपको उन चीज़ों के साथ फेमिलियर करना है जो क्वालिटीज़ हैं जब हम फॉर्मल मेडिटेशन में बैठते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि जैसे हम खड़े हैं और सामने से कुछ जा रहा है या कोई कोई परिस्थिति है और हम बोलेंगे कि ये जो परिस्थिति है इसमें करुणा होनी चाहिए या इसमें मुदिता होनी चाहिए, तो वो तो वैसा नहीं होता है। तो वो कह रहे थे कि जैसे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जैसे साधना करते हैं, जैसे धर्म के बारे में करेंगे या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे हम रिफ्लेक्शन या सोच विचार चिंतन मनन करते हैं, जैसे शरीर के बारे में करते हैं, मरने के बारे में मरणासति करते हैं, तो उसमें हम लोग एक समय अलग से निकाल के इन सारी चिंतन मनन, इन सारी एस्पेक्ट्स जो धर्म के हैं उसके बारे में टाइम रख के उनके बारे में सोच विचार चिंतन मनन कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप कोई कहीं भी कर सकता है, चाहे आप मोनेस्ट्री में हैं, चाहे आप अपने घर पे हैं, तो आप कर सकते हैं। और दूसरा अजन बता रहे थे कि जैसे इनमें हम साधना कर सकते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट के तरीके के पे भी ये टॉपिक ले सकते हैं। हाँ, अगर इस टॉपिक इस पर्टिकुलर जैसे मरणासति के बारे में सोचते हैं या जैसे कॉन्टेम्पलेशन ऑफ बॉडी के बारे में सोच के आप अलग अलग चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि किस तरीके से अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसके रिजल्ट आप देख सकते हो फिर। But it also works the other way around, that the informal meditation informs or triggers or supports your formal meditation. Of course it does, because if you weren't spending the time outside the formal meditation, if you weren't spending the time with the Dhamma but with worldly things, you'd be much more scattered than when you want to sit down and be peaceful. It may not even be possible if we feed ourselves all the contents from all kinds of worldly things. Then it's very difficult in a formal meditation then to shut down. So it's also very important that the things that we do in daily life are supported by the Dhamma, and they may actually feed back very directly to our formal meditation. And sometimes formal meditation is not very long, maybe 10, 15 minutes, but if we've spent a day with mindfulness, wisdom, compassion, and have been interacting skillfully with other people, had a sense of sharing, generosity, letting go, then at the end of the day, we feel so happy with our actions that we've done all during the day, whether it's on the level of Shila or whether it's on the level of metta or so, we then feel so happy that actually the mind may enter a kind of like the formal meditation session in a very deep way directly, because we've got this wholesome potential coming from the activities that we've done during the day. For example, if you take some time every day and you're practicing to support other people or do some generosity, then at the end of the day, it feels like I deserve peace. I've done everything just right. And then you can easily watch your breath, and it maybe becomes very peaceful, blissful, deep meditation very quickly. So it's not for the formal meditation, it's also not the amount of hours. I've seen many monks sit and literally try to push it, that the more you sit, the better. And the longer you sit, the better. And the tougher you are, the better. The less you move, the better. And then these monks get more and more bitter, and everything becomes a disturbance. And they lack the interface with the real world. When you're in real world and you sometimes through the power of your mindfulness and wisdom, you're able to let go of something, and something that's been disturbing you or triggering you, as we say these days, then
you can easily let go of it. And that capacity to let go then comes back to you when you're sitting on the meditation cushion as well. Plus the whole feeling of, I've done everything wholesome, in a wholesome way. I've done everything properly. I didn't do any shortcuts. I didn't do anything on account of worldly things. I just wanted to do the right thing all day. This is a wonderful practice. If you are a householder and you can do everything in a Dhamma way, everything correctly, neatly, properly, and helpfully the whole day, it's a tough practice. You can count the hours. If you've done this maybe 12 hours from 8 a.m. to 8 p.m., have done everything correct, everything neat, fine, mindfully, that's tough practice as well. Similar to sitting 10 hours is usually considered tough. This is a real good yogi. This is a real practitioner. But like we overlook the power of like having done things in daily life, informally, with a heart of Dhamma in a fully dedicated way. If those people that focus on the formal meditation were to learn from those that focus on the informal, and the informal ones were to learn from the formal ones, then we'd have the perfect Dhamma practice, like mixing those two. जैसे इनफॉर्मल जिसको हम बोलते हैं वो हमारी फॉर्मल मेडिटेशन को भी सपोर्ट करता है। तो उसमें ये होता है कि हम जो पूरे दिन में जो भी काम करते हैं वो जब भी हम फॉर्मली बैठते हैं उसका जो भी भाव है वो जब हम बैठते हैं तो वो आता ही है। तो अगर हम पूरा दिन अपना व्यतीत करते हैं कंपैशन, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने में, तो ये सारी जब जब हम बैठते हैं तो ये सारी जो भाव दशाएं हैं हमारे मन में, जब हम फॉर्मली बैठते हैं तो एक खुशी से हम बैठते हैं और हमारा जो प्रैक्टिस है, जैसे ध्यान कर रहे हैं हम लोग, अगर हम सांस को देख रहे हैं तो बहुत आराम से डिस्ट्रैक्शंस हमारे ख़त्म हो जाते हैं और आराम से हम डीप ध्यान में या समाधि में जा सकते हैं। उसी तरीके से बोल रहे थे कि फॉर्मल प्रैक्टिस, जैसे अजन कुछ भिक्षुओं के हिसाब से एग्जांपल दे रहे थे कि कई लोग काउंट करते हैं कि हाँ मैंने इतने घंटे प्रैक्टिस की, तो वो ये नहीं है कि हम कितने ज़्यादा बैठ सकते हैं, कितने ज़्यादा घंटे बैठ सकते हैं या कितने बिना हिले बैठ सकते हैं। और वो बता रहे थे कई बार कुछ लोग जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक्चुअली में नॉर्मल ज़िंदगी या नॉर्मल लोगों के बारे में ज़्यादा बिटर हो जाते हैं। और क्योंकि वो लोग अपनी सिर्फ फॉर्मल प्रैक्टिस पे इतना जोर देते हैं तो वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और उनके मन में लोगों के प्रति काफ़ी गुस्सा सा रहता है। लेकिन अगर हम पूरा दिन जो भी काम कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, जो भी हमारे को काम दिया गया या जो भी हमको करना है, जैसे हमको पानी भरना है या कोई आया है उसको अच्छे से मिलना है, उसको रिसीव करना है, कोई भी काम अच्छे से करे तो हमारा जो पूरा चित्त है वो खुशी से खुश रहता है। और यही चीज़ अगर आप गृहस्थ भी हो तो आपके लिए भी अप्लाई होता है। जैसे अगर आप कोई पूरे दिन में कुछ भी काम कर रहे हो तो अच्छे से कर रहे हो, सही ढंग से कर रहे हो, किसी का गलत नहीं कर रहे हो, तो जब आप फॉर्मल प्रैक्टिस के लिए बैठते हो तो आपकी भाव दशा या मन की जो दशा है वो खुश रहती है और जो आप समाधि में बैठते हो या ध्यान में बैठते हो तो वो जल्दी से लग जाता है। और लास्ट में जो यही बोल रहे थे कि बेस्ट तो ये होगा कि जो लोग इनफॉर्मल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो कुछ फॉर्मल वालों का देखें, और जो इनफॉर्मल पे, जो फॉर्मल वाले ज़्यादा फोकस करते हैं वो इनफॉर्मल वालों पे करें तो वो एक एक्चुअली सही मिक्स हो जाएगा और वो ही अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी जब आप फॉर्मल और इनफॉर्मल को एक सही ढंग से मिला के प्रैक्टिस करते हैं। So to summarize, the practice at home, or the practice in the monastery, the practice as a householder, or a practice of the as a bhikkhu, it doesn't matter. You need both. In all situations, you need the appropriate Dhamma
Dhamma practice, and not to go to the worldly things, not to trash your mind with silly things that like are superficial and about atta, self, and status and things like that. Just to practice with the situations by letting go, and you can trust that if you maintain a certain amount of formal practice, it will get more quality. May be even more, or maybe deeper. And the informal interactions will also benefit from the formal interactions, from the formal practice, because you said it very clearly that this is what you want to apply. You want to kind of have a mind that has these qualities, and you try to find ways of implementing these things. So it works both ways. The mixture depends on the situation. It also depends on the situation of the history of your own practice. There are people who have practiced too much in a formal way and too little in an applied way or in an informal way. And there's people that have practiced so little on the formal level that they would actually benefit from being put into a kind of container where they can't do anything other than sit and breathe. So like, we don't know. We have to apply wisdom and figure it out, that both inform or support each other. And then, as I said, like, I don't think it's like much different than as a householder than as a monk. As a monk, there's also things that you can do to distract yourself and evade Dhamma. Basically, we're human beings, and so in that sense, like, we go through phases, sometimes hyper inspired, overdoing it, sometimes too little and getting slack. So it constantly needs wisdom. And I wanted to close by saying, like Ajahn Chah always said, like, everything is teaching us. So don't separate. Like, if you practice Dhamma, you can practice it with everything. That's my full belief. And I think the Ajahn Chah would probably, I say, caution us to separate. Okay, this is practice and this is not practice. You guys can practice, I can't. No, on every level we can practice. लास्ट में अजन बोले थे कि मैं चाहे आप गृहस्थ हों या मोनेस्टिक हों, चाहे आप मोनेस्ट्री में रहते हो या घरों में रहते हो, सबके लिए धर्म की प्रैक्टिस ज़रूरी है। और प्रैक्टिस जैसे कोई भी, वैसे अजन बता रहे थे कि जैसे प्रैक्टिस कोई भी सिचुएशन आती है तो हम अगर इनफॉर्मल जिसको बोलते हैं, अगर वो हम लेटिंग गो जिसको बोलते कि वो जाने दो, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है सब कुछ, तो उस एहसास से या उस भाव से अगर हम करते हैं तो हमारी कोई भी लाइफ की सिचुएशन प्रैक्टिस बन जाती है। और लेकिन जैसे अगर गृहस्थ हैं तो हमको कुछ टाइम दिन में या फॉर्मल प्रैक्टिस के लिए रखना चाहिए अगर हमको धर्म के रास्ते पर चलना है। और इनफॉर्मली जो भी हमारी, मतलब जिसको इनफॉर्मल बोलते हैं, अगर हमारी पूरी लाइफ में जैसे पूरा दिनचर्या है, अगर कोई पूरी दिनचर्या में अगर हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम हमारे पीछे उस काम को करने के भाव के पीछे जो असली भाव वो धर्म का होगा, तो वो इनफॉर्मल प्रैक्टिस का काम करेगी और वही फिर अल्टीमेटली हमारे फॉर्मल प्रैक्टिस में सपोर्ट करेगी। और जैसे अगर आप कोई भी इंसान है, उसके अपने लिए खुद से ये पता करना पड़ेगा कि कितनी उसको फॉर्मल प्रैक्टिस करनी है और कितनी इनफॉर्मल। तो वो बैलेंस तो उसको खुद से ही जब वो प्रैक्टिस करेगा, साधना करेगा, तो उसको समझ आएगी कि हाँ कौन सी चीज़ किसको सपोर्ट कर रही है, तो वही बैलेंस कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मॉन्क हो या मतलब गृहस्थ हो तो उसमें कोई फ़र्क है। तो जैसे अजन बता रहे थे कि कई बार भिक्षु होते हैं, वो लोग, हम लोग भी मतलब फेजेस में होते हैं। कभी हम ज़्यादा, कोई इंसान ज़्यादा फॉर्मल की तरफ बढ़ जाता है तो वो अपनी इनफॉर्मल पे ध्यान नहीं देता, और कई लोग बिल्कुल फॉर्मल पे ध्यान नहीं देते और वो इनफॉर्मल प्रैक्टिस पे लगे रहते हैं, और वो कई बार थोड़ा मतलब ढीले भी पड़ जाते हैं। बट लेकिन वही चीज़ है कि हमको, जब हम ये चीज़ें करते तभी हमको समझ आती है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ से हमको प्रोग्रेस मिल रहा है। और लास्ट में उन्होंने बोला कि जैसे सबसे, वो बता रहे थे कि अजन चाह
ने बताया, अपने जब बोला करते थे तो वो बोलते थे कि हर चीज़ हमको सिखाती है, लाइक एवरीथिंग इज टीचिंग अस। तो वही उनकी सबसे बड़ी एक मेन टीचिंग से है। तो वो बोलते हैं कि अगर ये फिर सबके लिए है ना, चाहे आप भिक्षु हैं चाहे आप गृहस्थ हैं, तो हमको कोई भी जीवन में परिस्थिति आती है तो वो हमारे लिए प्रैक्टिस का एक मतलब साधना का मौका है। तो अगर हम उस एटीट्यूड से प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ हमको साधना का मौका बनेगी और हम प्रगति करेंगे। Thank you. Yeah. Yeah. I don't know. I'm going through a phase right now where I'm mostly inclined towards spending more time alone. Small things sometimes, triggers, um, and sometimes even there is nothing but a sense of unease in heart. And when I sit alone, look at breath or sensations or listen to any Dhamma talk, it settles down and it brings ease into heart. But there is a pattern that now I have to do it much more frequently to settle myself. That uneasiness is coming much more frequently. I don't I could not understand the reason, because all other things like variables, like things which are coming, they are more or less same, but somehow this feeling of uneasiness, I have to work very frequently, like after every 1 or 2 hours I have to go back to breath, go back to sensations, maybe listen to Dhamma talk to settle myself. And of course there are situations when people or things are triggering me, when there are contradictory, you want to do things which are aligned with Dhamma and people are expecting something else, and there is contradiction, again you have to come back. So this is, do you have any comments or suggestion? And thank you. Okay. So generally, I think we go through phases in life, and sometimes there are phases where we want to withdraw and be more alone, and sometimes there are things where we feel newly inspired by something, and everything is like say outgoing and capable of taking in a lot of new things. So. I don't know you so well, but like I find it's important just to um, work on whatever level you are, and not to compare and say it should be different or I'm doing something wrong, but try to nourish a sense of like joy while doing the things that you are doing, and be able to have some say directly positive meditations, just like the ones I talked about, the Brahma Viharas. They're actually very, like by conventional reality, they're charged in a positive way. They're wholesome dhammas. And so that you don't fall into a feeling of like lack of energy. And particularly if the feeling is, I want to withdraw and be away from others, that you still do something that has an aspect of sharing or an aspect of like dedicating it. It can also be an internal determination, for example, to practice for one's deceased relatives or so, trying to make a connection beyond your own sphere where you're practicing with yourself and your mind states, and to bridge it to other people and other beings. It doesn't mean that you have to go back into social context all the time, but like just as a balance, that you train yourself. Not, this is not just about me. It is, I have a role to play
and I have an impact on other people as well. I find that's very motivating sometimes in the monastery when we have like periods where the monks are low on energy and down, to say you can just do something nice for somebody else. For example, make a wooden spoon for a friend or so. Like, it can be a gesture, or it can be also a regular practice of sharing the benefits of one's practice, or practicing metta bhavana. And the amount of seclusion, or the amount of like withdrawal, or the amount of say solitude that one feels one needs, is it depends on certain phases of life. Eventually, I think it's important that you feel happy and at ease with it. And maybe it's worth looking into what causes the dukkha, or the need for more effort. And generally, it's not wrong if there's like a sense of urgency, and a sense of feeling of I feel say all I want to do is listen to Dhamma, and maybe you need more Dhamma input, or more supportive surroundings. That's also okay, as long as it brings back some feeling of piti, or joy, or sattha. And if you feel like that, like inwardly you're drying up and it's getting very lonely, then please do seek other kalyamittas. Come, like you're coming here, or places where you can do things together, even if it's a little bit of just simple charity work, because it feeds back on the feeling of, yes, I've done everything all right, and I've done some wholesome things, and you can be then relaxing in yourself in a positive way. So it's hard to say, because I don't really know you, but like if somebody withdraws and unwholesome mind states decrease, then it's better to seek company and find a good friend, maybe have a chat and forget about the Dhamma practice in that sense, but just open your heart and speak with another person, and or like family and friends, and or like if you can say do something by yourself, maybe do some acts of friendliness, in whether directly or indirectly, either through some sharing of things with another person or group, or through the dedicating of merit. But if it's the feeling is of like just simply having had enough, and the world is like basically samsara is constantly repeating itself, and there is like a sense of positive disenchantment with the world, and it's actually something that makes you feel like positive it gives you a sense of energy and virya, and the inspiration in that sense is like much more like for example, when I used to study before I became a monk, I had a few years where I wanted to finish my studies, and I realized like actually life was just simply doing my studies. The things that I used to do, like going to do some rowing or some guitar playing or so, they just seemed so pointless. And I felt like, but overall I felt like I know what I want to do. I know where I'm heading for, and I feel happy about that. I feel privileged about that. It was something like a sense of like the worldly stuff gets less and less enticing. And it was more like, okay, I don't have many friends because they're all going to parties, they're all drinking beer, and the guitar music was too loud and seemed to be full of atta, even arts and music. I felt, come on, what's the point? I've done this so much already. What's the point of it? And so it led me then to longer monastic stay, basically. And but maybe for you it's different. I don't know, but like the two things are quite different. One is like going towards like a sense of like negativity. The other one is going towards a sense of disenchantment with worldly things. And this is actually a positive energy. If you can use that to bring up gratitude that you found the Dhamma, that you're one
person that is able to connect to worldly things in an aloof way, and you don't need it, you don't feed on it, and then make much of that and feel joy and feel that it's a potential for you to develop further, then that's fine. So it's hard to say. Like, you'd also have to be very honest with yourself. If you know that there is a part, like maybe sometimes also before you had the Dhamma contact, and you were every now and again thinking like in a depressive way or so, then be careful. Then rather seek another friend, talk it through, and go for a walk, and just kind of be just a normal human being, normal Putuchana, basically. Don't think about anything, just like just go back to harmless, friendly interactions. And if it's something that brings you the other way, like if it's not the slightly negative way of seeing the world, but like it's a positive way of seeing a way out of the world, like through disenchantment, viraga, then comes nirota, basically, and then gradually build up that idea. Okay, if I continue to practice, I'm actually in a safe place. The world is quite difficult right now. Honestly, I don't know whether there's an objective way of measuring it, how difficult it was even 30 years before, when I wanted to become a monk from my student time. I found the world already quite unacceptable, and it was even more. I think we can possibly add a few notches of dukkha happening in the world, like looking at all the multiple crises or so. But like if there is a positive feeling of I'm lucky because I got a good angle on this, and I know actually my inner happiness, my inner relationship of the Dhamma is not determined by the news, not determined by social justice or injustice. I have my own inner refuge in the Dhamma. If you can see it in terms of Dhamma, then it's actually like growing in the practice. Another aspect I wanted to add is, if you sometimes are on a level of like engagement with Dhamma practice, already small things do suddenly matter. And before we were able to just kind of overlook them casually and not care about them, be somehow negligent or heedless. But for example, in the monastery, it comes up that people become pakao in Wat Bananacha, for example, or other monasteries, and suddenly small little things that they would never have bothered about suddenly become a big disturbance in that sense, like they trigger our reactions. It may well be that, like, okay, we're not having distractions in that context. We don't have like many say hobbies or outlets for anything, so everything counts more, and our mindfulness is much more sharpened, and we then suddenly see little things that before we have overlooked. For example, somebody who's a fellow pakao, a fellow guest of the monastery. Yeah, anagarika, not pakao, like I have to use the right words. So like if somebody's a newcomer in the monastery, clad in white, and he practices together with two other anagarikas or newcomers, and they suddenly notice that like they get on their nerves because of tiny little things that they do. Somebody puts up the turns on the fan too loud, or like makes a big show of holding the chanting book up high and projecting his voice, making a big scene about, look at how wonderful I'm chanting. And the other one gets completely offended by that and feels like, what is this? Like, these guys, weird. And so it gets critical about small things. This may well be because there's not much distraction and there's not much outlet. And if you're in a situation where you do a lot of retreats and you do a lot of like seclusion anyway, then it may well be that there's an over magnifying of certain small details that before you would have just brushed away. So also then to be generous and see it as what it is. There's like many levels of like greed, hatred, and delusion in a human being. Generally, in the average worldly life, people are gratifying their greed
their sexual desire. They're eating at any time they like, and they like are able to make sarcastic, bitter comments about all kinds of things, likes and dislikes on social media, and in real life they're using bad speech. So basically, they've got a way of just straight away just letting off steam. And whereas, like, if we are in the framework of Sila and a framework of Dhamma practice, and particularly going to well-structured retreats where everything is kind of polished, so that you're very, very detailed about what you're doing, then of course, then small things suddenly take the role of what were the big things before. We're not having sex and drugs, basically, so we overeat, or like we indulge, or we kind of feed on certain things. So it's all relative. To summarize, like you need to be sure that, like by your whole former life, that you're not falling into a negative, depressed state. If there's any feeling, honestly, of like really just wanting to be a normal person and having a friend to talk or so, please do so and go into a group and just like go back to society a little bit in that sense. But if it's like more the feeling of, okay, I'm actually very happy inside, and I'm doing this. I just noticed that like the things that were attractive before are fading, and what I do is replace it with Dhamma. And it seems strange that now I need to listen to so many Dhamma talks before just one Dhamma talk did the job. Now it may well be, yeah, that you're in that mode of having all these relative say relatively peaceful surroundings already, and like you got some choices of like excluding some of the worldly stuff, and you're feeling disenchantment and feeling more inclined to making changes in your life that like maybe are aiming at Dhamma rather than at worldly things. But this is the second thing would be more like a feeling of inner surprise and gratitude, like I'm feeling, oh, this is quite precious what I'm experiencing right now, and it's not something that is over clouded by like even seeing the bad news of the world still triggers the feeling of, I'm lucky that I understand that peace ultimately rests inside my heart, and I'm so glad I can develop that. So there's a sense of uplift in that. So you'd have to kind of like look at yourself honestly what it is about. If I don't know you so well, so it's hard to say. But be careful if there's signs of like unfair objection to the world out of like a sense of, I'm fed up, and then it could be an unwholesome mind state. So be careful about that. Said no need to translate because it was an English question. So we do one more. कोई हॉल में कुछ कहना चाहे तो एक और हम ले सकते हैं, या इंटरनेट पे. Otherwise, you can also relax and meet in the evening then. And also meet in the evening and call it break. And yeah, thank you for the questions and yeah, like let's make use of it. And what I say is usually like say something I would really like everybody to not take for like for 100% to be copied, but like to be applied and reflected on, and basically I like creative Dhamma, that you get some input by this particular monk and maybe tomorrow by another one, and then you do a retreat and you get another bit of input, so that you are creative and making the Dhamma into a whole program for you, and a whole application of mindfulness and wisdom. And that's the main thing. And these are all little snippets that can help Dhamma creative thinking to arise, and that's like I think the way to practice. तो जूम ऑडियंस के लिए अब हम सीधे शाम के सत्र में मिलेंगे 7 बजे, और एज यूजुअल इवनिंग सेशन रहेगा 7 से 8:30.
Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Saṅghang Namami Naman. अब हम अजान को 3 बार नमन करेंगे। प्रथम नमन, द्वितीय नमन, तृतीय नमन। Thank you.